लगती है when education is coupled with creativity. जब मैं स्कूल में थी तो मेरे बड़े कंप्लेंट्स होते थे कि आप मुझे बांध के रखते हो कुर्सी से और आप मुझे बताते हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं हाथ फैलाना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ और मुझे कंट्रोल किया जाता है और मुझे फिक्स सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं. And it's so interesting today to see this, because I don't say that things are not taught in classrooms, but what is taught outside the classrooms is so important and so liberating. So thank you Edithon, thank you Anko, thank you ma'am for this collaboration which is going to teach everybody, not just children. हम सबको इतना सिखाता है क्योंकि हम जितना लाइफ से सीखते हैं और जितनी क्रिएटिविटी हम बाहर सीखते हैं फ्रीडम से, वो एक क्लास में ही सिर्फ नहीं हो सकती. एंड आई एम नॉट नेगेटिंग एजुकेशन, आई एम अ हाईली, आई थिंक ओवर हाईली एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग, बट this combination of creativity and education is extremely important. We must allow children to tell stories. We must allow them to create stories, whether they are real or whether they are unreal. But stories are a very important part of life. This is why many years ago when Roshan was doing this spoken word, which then became such a big spoken fest, I was very interested. क्योंकि उस वक्त रोशन का एक विजन था जो किसी और का उस वक्त नहीं था, but he had a goal. And today to see him, congratulations Rosh, because 10 years later you've done this. हम इस छोटे से कमरे में बैठ के कहानियाँ बोलते थे और वो इतनी ज़रूरी कहानियाँ थी. And today those stories are available to everyone. And I'm very happy that I'm sitting in a place where education and these stories combine. And I wish this endeavor the best. Congrats on making it to a book of records. Congratulations on bringing everybody here together. May you continue to do this, and may students continue to feel liberated and grow with complete freedom and creativity. I'm personally very scared of AI, and I will take on the side of EI, and I hope that we will find a balance, because I'm more leaning towards emotional things, as one can see from the book that I have written. And I would also say that my book Untamed deals with a lot of emotional intelligence and growth and loss and redemption and grief. So if you haven't picked it up, I urge you to pick it up, because it's now today literally a Bible for mental health, and it's a very real and palpable journey of not just my life, लेकिन बहुत लोगों की जिंदगी में ये हुआ है. एंड हमें समझ नहीं आता कि हम ग्रीफ और लॉस से कैसे कोप करें. अगर आप लॉस्ट फील करते हैं और अकेला फील करते हैं तो इस किताब को जरूर उठाइएगा. एंड थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू संध्या.